6 years ago, we used to see many accidents happening on a regular basis in Gurgaon. Based on what we saw, we realized there was a huge need for an ambulance service. Lives could be saved if people reached the hospital in time. With that intent, we started with 2 basic life support ambulances in Gurgaon. If ambulances reached quickly, lives could be saved. Also, we realized that nobody knows what to do till the ambulance arrives. There's panic, there's chaos. कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई पानी पिला रहा है, but nobody really knows what needs to be done at that time. There's a need for first responders because nobody is trained on how to help a person till we reach the hospital. So we started a paramedic institute as well as first aid trainings for the community. Hello, my name is Manvish. I'm from Kashmir and I'm a graduation in linguistics plus I'm pursuing PG in clinical psychology. Then I came to know about Vivo Healthcare. So I came here for doing dialysis technician course. As we know कि इंडिया में बहुत सारे डायबिटीज पर्सन ऐसे होते हैं जिनको डायलिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो यहाँ आने के बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है. आई रियली थैंक वीवो. यहाँ के जो यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ का स्टाफ पूरा बहुत अच्छा है. मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला. So उसके बाद I got placed here in Vantage Response and Emergency Services. I was working there as IMO. Really मैं दिन में बहुत सारी क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ. एक प्लेटफॉर्म मिला मेरी लाइफ में एक अच्छा सा करने के लिए. So I really thank Vivo for this. हेलो, मेरा नाम मनीरा है और मैं कश्मीर से आई हूँ. मैंने GNM करा हुआ है और उसके बाद मैंने उड़ान के थ्रू वीवो हेल्थ केयर में मैं आई एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन. यहाँ पे हमें सीखने को बहुत मिला. यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है. हमें प्रैक्टिकली भी सिखाया गया, इंटर्नशिप के लिए भी भेजा गया. उसके बाद हमें BLK में हमें यहाँ पे जॉब मिली BLK में. वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा. मैं कश्मीर के हर एक बच्चे को रिकमेंड करती हूँ कि वो उड़ान बैच को चूज़ करे और घर से बाहर निकल कर देखे. मतलब यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो कश्मीर में नहीं मिलता है. यहाँ पे हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं एज कम्पेयर टू कश्मीर. यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब हर एक पेशेंट को केयर दिया जाता है. बहुत फॉरवर्ड है. तो आप हर एक यहाँ आए और सीखे ताकि हम हम बहुत कुछ सीखे, हमें लाइफ में एक्सपोजर मिले. Total 33 modes. So while we were doing these trainings, people asked us, who has authorized you to train? So we went to the health ministry. They said, आप तो education का काम कर रहे हो. And we went to the education ministry and they said, you are doing work in healthcare, and we couldn't really find anybody that we could get ourselves accredited with. So we became the International Training Center for American Heart Association in India. It is recognized all across the world. It is the apex body. We also tied up with American Safety and Health Institute. It focuses on training for the corporate environment. But the challenge was we needed to do trainings in Hindi. We are grateful to Quality Council of India. They validated our programs because the larger population understood this in Hindi, and international programs, all their videos and their material and their content was only in English. This helped us reach wider into the community. When we came to know that the Government of India was forming Healthcare Sector Skill Council, we were extremely delighted and we reached out to them, and we were their first training partner in North India. And we started with the emergency medical technician program.